बिट्स पिलानीन जी दुःखदायक घटना जाल्या हांव खेद व्यक्त करता। म्हाका खूप वायट दिसलें ती न्यूज वाचिना फुडें। हांवें रोखडोच फोन करून चवकशी केली। 20 वर्सांचो भुरगो इज फ्रॉम द बेंगलोरांतलो। बिट्स पिलानी कॉलेज कॅम्पसात एका वर्सा भितर सेगीत 5 विद्यार्थ्यांनी जीव सोंपयल्ल्याच्यो धक्कादायक घटना घडल्यात। ह्या घटनांचेर जायते प्रश्न सध्याक उपरासले वता। ह्या घटनांचेर विरोधी पक्षान सखोल चौकशी जावची अशी मागणी केली। ह्या घटनेचेर मुखेलमंत्र्यांनी खेद व्यक्त केला। त्याच प्रमाण हाची चौकशी करपाक कलेक्टराच्या अंडर कमिटी स्थापीत केल्या। शिक्षण संस्थांनी अश्यो घटना घडटा जाल्यार ताची सखोल चौकशी करपाची थारायला म्हूण मुखेलमंत्री उलयले। दरम्यान ह्या घटनेची चौकशी करपाक SIT फॉर्म करपाक जाय म्हूण फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मागणी केल्या। बिट्स पिलानीन जी दुःखदायक घटना जाल्या हांव खेद व्यक्त करता। म्हाका खूप वायट दिसलें ती न्यूज वाचिना फुडें। हांवें रोखडोच फोन करून चवकशी केली। 20 वर्सांचो भुरगो इज फ्रॉम द बेंगलोरांतलो। ताजी हिस्ट्री हे तर सगळे वेगळी हांव तितून वचना, बट फाटले सगळे जाल्ले इन्सिडंट्स हे लक्षात घेवन आमी कलेक्टराच्या अंडर कमिटी ऑलरेडी एस्टाब्लीश केल्या। अशा पद्दतीच्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी खंयसरूय जर अशे इन्सिडंट्स जाता आसत जाल्यार तेजी थॉरोली इन्क्वायरी करपाची थारायल्या आनी वॉटेवर आमकां मेजर ज्यो गजाली करपाक जाय आसत इन्स्टिट्यूशनाक इन्स्ट्रक्शन्स तरी दिवची पडली रिगार्डींग कावन्सिलींग रिगार्डींग बाकीच्या सगळ्या गजालीचे। तर आमी पयलीं कलेक्टराच्या अंडर हे करून रिपोर्ट्स घेतले आनी ताज्या उपरांत तांकां जी फुडल्यो ताका जे आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन आसत किंवा गव्हर्मेंटाच्या वतीन आसत तांकां ज्यो गजाली ज्यो प्रिकॉशन्स तांच्यांनी घेवपाक जाय ते तांकां एडवायजरीज इश्यू करतले। आतां एट प्रेझेंट साउथ गोवा कलेक्टर आनी इवन दो आमी नॉर्थ गोवानूय तशी कमिटी घालतले आनी इन फ्युचर हे अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे खंयसरूय जावचे न्ही हाजो सरकाराचो ध्येय आसा। हांवें ताकाच लागून सांगलें फाटलेय फावटी हांवें ताका आफोन हाडिल्ले, फाटलेय फावटी तांचे कडेन हांव पर्सनल उलयल्लो, कारण अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावप एखाद्या इन्स्टिट्यूशना खातीर आनी राज्या खातीरूय बी योग्य न्ही। म्हणून हांवें म्हटलां की आमी कलेक्टराच्या अंडर कमिटी काडल्या आनी तांकां सगळे ताजो रिपोर्ट जो आसा बेगिनात बेगीन सबमीट करपाक लायला। पुलीस आनी हे आमचे वेगळ्या पद्दतीन रिपोर्ट करता, बट साउथ गोवा कलेक्टराच्या अंडर ताजो रिपोर्ट आयल्या उपरांत हांव परत जे कितें सांगपाचें। थँक्यू। लास्ट टाइम सुद्धा गव्हर्नरान रिपोर्ट मागयलो आणि फाटल्यान एक्शन काय इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एन्श्योर स्टुडंट वेलफेअर, whether it is academic pressure, whether it is ragging, or whether it is some other external factors that are affecting, because 5 cases in 8 months is too much in one single campus. नेक्स्ट फुडल्या हो रिपोर्ट आयल्या उपरांत फाटले सगळे रिपोर्ट्स एकदा कंपॅरिजन करून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय आनी बाकीच्या सगळ्यांक सांगपाचें। बिट्स पिलानी there should be an SIT into why students are dying. What is the role of the new vice chancellor? How is the functioning? हांवें आयकलां त्या विशयान कितेंय मातशें चुकलें जाल्यार पेरंटल इश्यूज जाता, रोखड्या आवय बापायक आपयता। पयलीं आमी कशें आशिल्ले स्कुलान बी मातशें कोणाक चिमटो काडलो जाल्यार बापायक आपय। अशें जर 17-18 वर्सां जातकर चड करून आउट स्टेशन भुरग्यांक अशें जर करपाक लागले आनी हें जर डिसिप्लीन हाडलें जाल्यार आयच्या जमान्यान हें डिसिप्लीन चलना। हाजेर एक मेंटल प्रेशर येता आनी मेंटल हेल्थ इज अ बिग इश्यू। येदे व्हडले टॅक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटान जर मेंटल हेल्थाक कन्सिडरेशन ना आनी 5 मनीस मरतात जाल्यार इट्स टायम टू रिव्यू वेदर दिस टायप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स आर गुड फॉर गोवा। इक्विवलंट टू IIT मनीस मरता कशें थंय आनी दर प्रेशराचेर मरता की सगळे अभ्यास कित्याक करप, मरपा खातीर करप। इफ इट इज टू मच द स्टुडंट शूड टेक इट इजी न्ही, अरे मरप म्हळ्यार कितें इट्स द फायनल थिंग न्ही। सो आय थिंक देर इज अ सिरियस स्टडी जावपाक जाय। मुखेलमंत्र्यान अनाउन्स केला की कलेक्टर इज studying the issue and will submit a report. I hope the collector does the job and does not come under pressure. कित्याक बिट्स पिलानी कोणाचे बिल्लान कितें केलां 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन विकल्या जी भाऊसाहेब बांदोडकरान इंडस्ट्री खातीर हाडिल्ली। सगळ्यांत मॉडर्न गोवाज बिगस्ट स्कॅम इज डन बाय द सेम पीपल हू ओन बिट्स पिलानी। सो समहाव whether they will do their inquiry properly and whether the real findings of the inquiry will come, I doubt.
I don't doubt the collector. Collector is a good lady. South Goa collector is that way a good lady, but should not come under pressure. And आतून हे जे कितें जाता, there is something 100% odd. Today is Teachers' Day. If the teachers start become policemen, then you are not a teacher, you are a policeman. And policemen are not supposed to teach technology. Then people die. Simple as that. So there is something seriously wrong with BITS Pilani. आज मेरे गोंयची जनता, गोंयचे लोक from the word of BITS Pilani set केन्ना जाला ते बसून जमीन दिल्या ती illegal. It is change of use of land. That itself is illegal. पण लोकांनी कितें म्हणलें एक बरें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन येता गोंया खातीर आसली म्हणून लोक उलयले ना ते बसून तातूंत तांचें सारकें ना. सो ते बीच जे घाला पळय ते सारकें ना. ताचे फुडलें कितें झाड आयलां ते मागीर फॉल्टी आसतलें. तुम्ही म्हणलं पण पेरेंट्स टीचर आसा ते प्रेशर घालता हांवें काल थोड्या कडेन हांव उलयलां अनऑफिशियली. हांवें आयकलें भशेन अशें की थंय वायस चान्सलर चेंज जालो आनी तो वायस चान्सलर सामको स्ट्रिक्ट ऑथॉरिटेरियन अशें आयकूंक येलें. ऑफ द कप हांवें आय शूड नॉट बी मेकिंग दीस कमेंट्स विदाउट स्टडी, बट दीस इज वॉट आय हॅव हर्ड फ्रॉम सर्टन सेक्शन ऑफ पेरंट्स. थंय अशें म्हणटात ते की कितेंय जर जालें मातशें घुसपलें जाल्यार तुज्या आवय बापायक हाडटात आनी भुरग्याचेर प्रेशर वाडटा आनी भुरगो चड करून जेन्ना आउट स्टेशन आसता आनी आवय बापायक बी हाडचें पडटा जाल्यार प्रेशराचेर भुरगो आत्महत्येचे कडेन पावता. पूण आवय बापायक कितें जर रॉंग करता आसताले भुरगे पूण अशेंय आयकूं येता ते कॉलेजीक सगळें चलता म्हणजे इलिगलिटीज कितें ड्रग्स आनी कितें. हांव हॉस्टेलाक हांवें मागीर ग्रॅज्युएशनाक हॉस्टेलान काडल्या. सगळी मस्ती करून दिली. हांवें आज एक रिस्पॉन्सिबल पेरंट आनी लोक प्रतिनिधी घेवन हांव उबो आहा. कित्याक एज आसता तेन्ना सगळें करपाचें आसता ते तितलें न्ही. हांव ड्रग्स आय डू नॉट एप्रूव ऑफ ड्रग्स, बट कोण चलो पिलो कितें हें केलें एक दीस जाता तें सगळें जाताच. व्हडले कोण दुदान धुतले कोण ना. सो इतलें ओगीच हें नाका. पूण मरप कित्याक मरप म्हणटा कितें प्रेशराचेर येवन मनीस आत्महत्या जाल्यार ती पसून झटाझट जाता म्हणल्यार कितें. देखिए, आज हमारे पास एक कॉल आया था जिसमें कि एक बच्चा है वो अपने कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली. ठीक है, तो अभी उसमें इंक्वेस्ट की जा रही है और एक यूडी अननेचुरल डेथ केस रजिस्टर किया जा रहा है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो आपको बताएंगे. जो पहले के जो 5-4 लोग हैं उसमें क्या था एक्चुअली सर? जो दिसंबर से लेकर अभी तक पहले जो 3 थे वो सुसाइडल हैंगिंग के केसेस थे. बाकी जो ये वाला और इससे पुराना वाला उसमें अभी भी कंफर्म अभी वाला तो अभी रजिस्टर इंक्वायरी हो रही है. इससे पुराना वाला है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर अभी तक उसमें कुछ निकल के नहीं आएगी. कॉज ऑफ डेथ अभी तक नहीं. और ड्रग्स बेस कुछ इन्वॉल्व है उसमें? अभी जो पिछले 5 जो केसेस हैं उसमें ऐसा कोई एंगल निकल के नहीं है. बिट्स पिलानी ने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ लिए हैं ताकि ऐसी सुसाइड ना हो? ऐसे कई सारे मेजर्स उन्होंने लिए हैं. हमारी मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं, तो बाकी के चीज़ें हम और आगे बताएंगे. सर वो डेथ हुई जो सुसाइड हुई है हैंग करके हुई है नॉर्मल? ये वाली बच्चा जो है वो बस उसकी डेड बॉडी ही वाज स्लीपिंग एंड ही डाइड. तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कॉज ऑफ डेथ क्या था.